Hello everyone, I am Deepak Gupta. Welcome to ZT classes. Today's topic will discuss in detail about electrical power. Okay, सबसे पहले तो हम explore करेंगे what exactly power means. So when two weightlifters are there and they are lifting the same amount of weight, so both of them are doing the same work. लेकिन वेटलिफ्टर जिसने गिरते पड़ते करके जैसे मर्जी वेट उठाया है विल हैव लेस पावर, और जिसने वेट बहुत इजीली कन्वीनियंटली उठाया है विल हैव मोर पावर. सो पावर इज बेसिकली हाउ मच एनर्जी यू कैन स्पेंड in less time. So if we'll talk about Usain Bolt, he can run 100-meter very fast because he can dissipate more power, or he can spend more energy in less time. तो अगर आप ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर सकते हैं लेस टाइम में, दैट मीन्स यू हैव गॉट मोर पावर. इसी को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में देखेंगे. सो वी ऑल आर अवेयर दैट electric energy can be converted into light energy or thermal energy, or with the help of motor it can be converted into mechanical energy, right? So electrical energy can be transferred into another energies, and the rate at which it can be transferred is what is electrical power. So if you can transfer that energy faster, then you have more power is there. So let's see the definition for it. So electrical power is nothing but rate at which work is done or energy is transferred. So related to electrical power, we have got symbol is P, SI unit is watt, which we'll see in the next few seconds, and it's a scalar or vector. It's a scalar quantity, right? Let's see a few formulas for power. So we know that power is the rate at which work is done or work done per unit of time. Now we know from the formula of voltage, so we are getting work done is nothing but voltage into Q, that is charge. So if we'll put this value of work done, so we'll get our new formula for power, that is power is V into Q upon T. Now here Q upon T, that is what is electric current, right? Charge per unit of time, that is I. So putting this, and we'll get our main formula for power, that is power is V into I. Right, now from Ohm's law we can put the value of V and I here, and we'll get another forms for power, that is power is I square R, and power is also equals to V square by R. Now in this formula is main which we'll be using, and few of the complicated questions will be using this formula also. Let's talk about unit of power. We have just seen unit of power is watt, and what exactly is 1 watt? So we'll say power is V into I. So 1 watt is the work done, or the rate at which the work is performed when 1 ampere of current is flowing across voltage of 1 volt. Right, so this derivation we are deriving from P is equals to VI. Now symbol for watt is W. It's not small but capital W. Watt is named after the famous inventor James Watt. He is known for steam engine. And let's see, है ना, कुछ और फॉर्म्स बेटा वॉट जो है और किस फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन विल टेक आउट, वी नो दैट पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. अब यहाँ पर वर्क डन की यूनिट जूल है, टाइम की सेकेंड है, तो वी कैन से 1 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड. अब यहीं पर वर्क डन क्या है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वी कैन कन्वर्ट, है ना, जूल को हम जो है न्यूटन मीटर करके भी लिख सकते हैं. सो दिस बिकम्स अगेन 1 watt is 1 Newton meter per second. Now further we can do it, right? We can write force as mass into acceleration and convert this. So we are getting 1 watt is kg meter square per second cube. है ना, ये हमारा जो है, जो आपका मैकेनिकल
फिजिक्स काइनेटिक फिजिक्स है उसमें जो है 1 watt विल टेक इन दिस टर्म्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में व्हेन वी आर टॉकिंग तो विल यूज पावर इज VI. So we can say watt 1 watt is 1 volt ampere or ampere square ohm or volt square ohm. So we have more units of power is there. So one common unit, it's not an SI unit but commonly used is horsepower. Especially when you are talking about जब आप किसी व्हीकल की बात करते हैं तो उसकी इंजन की पावर we take it in terms of horsepower. So exactly what happened is way back there was no car or vehicles were there. So it was only horse cart which was being used. So when they first invented the cars, so that time to make the people understand about the power of car, they started using the term horsepower. That is the power of engine is equivalent to 2 horsepower or 3 horses power. So to make the people public understand more about the power of engine. So this 1 horsepower, it was initially given by the British, and its mechanical horsepower or empirical horsepower, that is the power output which is power dissipation which is there when mass of 550 pounds is being lifted to a height of 1 feet in time of 1 second. This mechanical horsepower, its derivation is not important. Only thing you should be aware is 1 horsepower is 760 watt. And this same thing is in British units. So when we convert it into mechanical units, we get 1 horsepower is 735 watt. Now this is slightly confusing which one to be used. So horsepower, first thing is it's not SI unit, so not asked frequently, but if asked then universally it is taken 1 horsepower is 746 watt. That is what conversion unit you'll have to use. Let's see on practical terms. When we buy a bulb from a market, it has got certain markings are there. तो वो marking का क्या मतलब है, क्या significance है? So here it has got marking of 120 volt, 60 hertz and 10 watt. ठीक है बेटा, यहाँ पर 120 volt is the voltage supply. तो वोल्टेज सप्लाई आपका यूएसए एंड नॉर्दर्न अमेरिका में जो है दैट इज 120 वोल्ट. इंडिया एशियन कंट्रीज हैज गॉट 220 वोल्ट. ठीक है, तो ये बल्ब जो है दिस इज मेंट फॉर 120 वोल्ट वोल्टेज. अगर इसको आप 220 वोल्टेज में लगाएंगे तो देयर इज हाई वोल्टेज इज देयर, है ना. हाई वोल्टेज मीन्स हाई प्रेशर इज देयर एंड द फिलामेंट ऑफ दिस बल्ब विल नॉट बी एबल टू बियर दैट प्रेशर और ये फ्यूज हो जाएगा. 60 हर्ट्ज इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट, है ना. जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी यूजुअली इज 50 to 60 हर्ट्ज. मोस्टली इट इज सेम थ्रू आउट ऑल द कंट्रीज. 10 watt is what is the power dissipation is there. So this power dissipation means 10 watt is 10 joule per second. So every second it will dissipate energy of 10 joule. आप इसको when you are switching it on, so you are consuming 10 joule of energy per second. So this is what the reading of bulb mean. Let's take few numericals, है ना, just basic numericals जो हमने अभी तक की है उसी के बेस पर. तो सबसे पहले कुछ simple numericals. A bulb is rated at 250 watt, 40 amperes, find its power, है ना. बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है बेटा. वोल्टेज एम्पियर गिवन है, करंट गिवन है, आपको पावर फाइंड करना है. पावर इज V into I, तो यू विल यूज दिस एंड यू विल गेट 10,000 वॉट. अब ये जो 10,000 वॉट है इसको यू कैन कन्वर्ट इनटू किलोवाट, सो इट विल बिकम 10 किलोवाट. So let's take a second question. A light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt AC supply. Calculate the resistance of the bulb. तो यहाँ पर बेटा आपको पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है.
ठीक है, तो हम पावर का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों यूज हो रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो पावर की वैल्यू विल पुट और विल कैन टेक रेजिस्टेंस इज वी स्क्वायर बाय पी, and when putting the value you will get the value of resistance as 484 ohms. Let's take the next numerical. So we have to compare resistance of two bulbs जिनकी जो पावर है वो 50 वॉट और 100 वॉट है। ठीक है, तो दो बल्ब है, एक कम पावर का है, एक ज्यादा पावर का है ना। वी वांट टू नो कि उनकी जो रेजिस्टेंस की रेशियो है वो पावर पे कैसे डिपेंडेंट है। तो हम पावर का फॉर्मूला वी नो वी स्क्वायर बाय आर, और आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी। तो यहाँ पर विल पुट द वैल्यूज, विल गेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. सो दैट्स कमिंग एज 968 ohms एंड 484 ohms. तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे तो जिसकी पावर कम थी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। अगर वोल्टेज सप्लाई सेम है ना, सेम वोल्टेज पे अगर हमने बल्ब की पावर जो है आउटपुट कंपेयर किया है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। सो मोर पावर मींस लेस रेजिस्टेंस। इनफैक्ट अगर आप मार्केट से बल्ब खरीदते हैं, है ना, अगर आप ज्यादा पावर का बल्ब खरीदेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, उसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम होगी, और फिलामेंट की वायर जो है ज्यादा थिक होगी ताकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो। Well, let's see the next numerical. A lamp rated 100 watt at 110 volt is connected to the main electric supply. Find power of bulb if connected to 220 voltage. तो बेटा हमने यहाँ पर जो है लेट्स से यूएसए से हमने एक बल्ब खरीदा है, उसके ऊपर रेटिंग जो है वो 110 वोल्ट की है, और उसको हम इंडिया में 220 वोल्टेज पर कनेक्ट कर रहे हैं ना। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड इफ वी आर कनेक्टिंग 110 वोल्ट बल्ब टू 220 voltage. So we know that power is equals to V square by R. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वोल्ट जो रेजिस्टेंस है ना, बल्ब तो सेम ही है, तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट व्हेन R इज कांस्टेंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, वोल्टेज स्क्वायर, और P डैश अपॉन P इज इक्वल्स टू V dash upon V whole square. So let's put values from the question. We are getting 100 upon new power is 110 square by 220 square. You know, on solving it will get our new power as 400 watt. Let's take one more numerical on this, but before that let's explore what is going to happen. है ना, 100 watt जो पावर वाला बल्ब है बेटा, अगर वो 400 वॉट की एनर्जी डेसिपेट करेगा तो उसका फिलामेंट जो है हो सकता है वो इतनी एनर्जी जो है वो बियर ही ना कर पाए एंड इट विल मेल्ट। ठीक है, सो बल्ब मे फ्यूज, है ना, इफ वी आर पुटिंग 110 वोल्ट बल्ब टू 220 वोल्ट सप्लाई. Let's take the next question. So a bulb of similar question. Now this 100 watt bulb with 220 voltage is connected to 160 voltage supply. पहले वोल्टेज सप्लाई हमने इंक्रीज कर दी थी, नाउ यहाँ पर हम उसको कम वोल्टेज सप्लाई पर कनेक्ट कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स बेटा अगर वोल्टेज कम है तो आपका जो पावर आउटपुट है वो कम होगा, है ना. तो जो बल्ब है वो 100 वॉट और 100 जूल पर सेकेंड की जगह पर कम पावर डेसिपेट करेगा. कितनी कम करेगा? तो वी नो कि पावर जो है वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना. विल यूज द सेम फॉर्मूला. सो p अपॉन p डैश इज v अपॉन v डैश होल स्क्वायर, है ना. इसमें हम वैल्यूज डालेंगे तो विल गेट न्यू पावर एज 64 watt. From here we'll get very interesting and useful result, that is if V becomes n times or voltage become n times, power output will become n square times.
अगर आपने वोल्टेज जो है डबल कर दी है तो वोल्टेज डबल होने पर पावर आउटपुट विल बिकम 4 टाइम्स। अगर वोल्टेज आपने 4/5 कर दी है, पावर आउटपुट विल बिकम 16/25 टाइम्स। Let's see our next question. So we have a bulb rated 100 watt and 200 volt is used on a 100 volt line. तो बेटा बल्ब जो है वो it was meant for 200 volt but now it's used in 100 volt supply. You have to find the current in the bulb. तो बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा? So we'll do it in two ways. One is whereby we'll calculate how much is the resistance of the wire and then find our answer. So we are using our formula R is equals to V square by P, or the resistance of filament is 400 ohms. Now we have got resistance is there and voltage supply is there, and we can get our current through the circuit. Right, so we are getting our current as 0.25 ampere. In second way we'll do जो हमने बेटा ऊपर किया था, दैट इज कि अगर आपका वोल्टेज हाफ हो जाती है तो दैट मीन्स पावर विल बिकम 1/4। तो जो न्यू पावर डेसिपेट होगी बल्ब से दैट विल बी 1/4 ऑफ 100 वॉट और इट विल बी 25 वॉट। अब पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सो बेसिकली वी आर गेटिंग 25 is 100 into I. Solve it to get I as 1/4 of ampere. बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पावर ऑफ पंप पर आते हैं, तो लेट्स जस्ट डिस्कस द टॉपिक फर्स्ट। सो हमारे पास एक पंप गिवन है, ये पंप जो है दिस इज थ्रोइंग m kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ h मीटर, है ना, h मीटर की हाइट पर थ्रो कर रहा है, एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम द नोजल the water is coming at speed of V meter per second, and this is all happening in t second, है ना। So you have to calculate how much is the power of pump. So for that what we'll use is कि यहाँ से बेटा पंप जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, पंप is transferring the energy, है ना, that energy transfer is what we call per second is power. वो जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय इन गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर एंड इन गेनिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। तो फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो आवर इक्वेशन विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी P into T is equals to potential energy gained by water plus काइनेटिक एनर्जी गेन बाय वाटर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि जो हेड है पाइप का वहां से वाटर किस स्पीड से आ रहा है, सो विल एज्यूम दैट द वेलोसिटी बाय विच वाटर इज कमिंग आउट इज नेग्लिजिबल। सो इन दैट केस यू विल यूज ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स टेक few numericals on power of pump. So we have to find power of pump such that it can pump 600 kg of water to a height of 100 meter in 10 seconds. So what will be the power of pump? तो यहाँ पर we are not being provided how much is the velocity at the outlet. So we'll assume है ना कि velocity is negligible. So we'll just compare electrical energy transferred is potential energy gained by water. We'll put our formulas. Power into time is mgh. Let's put the values in this and we'll get our power as 5000 watt or 5 kilowatt. Let's take some more numericals. So in this question, power of pump is already given, that's 2000 watt. How much time will the pump take to fill a tank of dimension 2 cross 2 cross 1? So this is the dimension and this is the height of 20 meters is given.
So again here the velocity at outlet is not given, so we'll just use electrical energy consumed is equals to mechanical energy or potential energy gained by the water. So but for this we need how much water, how much quantity is transferred. So we'll first calculate what is the mass. So here we'll use that density of water is 1000 kg per meter cube. So total quantity of water which is transferred is 4000 kg. So let's put the values and we'll solve it to get T as 400 seconds. Let's take one or two more numericals to clear the concept better. So in this particular question, a pump is required to lift 1000 kg. We have to find the power of pump which is required to lift 1000 kg per minute from a well of depth 10 meter, and it is ejecting the water with speed of 10 meter per second. So this question we are converting electrical energy in both. It's getting converted into potential energy of water and kinetic energy of water. So this is a well is there. So you are lifting water from 10 meter height and then you are throwing out water at speed of 10 meter per second. So we'll equate same. Electrical energy is potential plus kinetic. We'll just put the values here. Only thing you have to be careful is that this time here is given as per minute, right? So that time has to be always in per second. So we'll put time as 60 seconds and the other values will put in this. So we'll get zeros getting cancelled on both the sides, and on solving we'll get our power as 2500 watt, or we can say 2.5 kilowatt. Okay, last numerical on this topic. So we have got a pump is there on the ground floor of building and can pump water to fill a tank of volume 3 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground, और यहाँ पर efficiency of pump given है 30%. How much electrical power is consumed by the pump? If required, you can pause the video and try to solve the question by yourself. But otherwise, approach is same. That is, यहाँ पर velocity is not given, so we'll take electrical energy is equals to potential energy, right? So we'll solve and we'll get. Now before solving, you have to take into fact that efficiency is 30%. So efficiency is 30% means that whatever electrical energy is being used, out of that 30% is only getting used for transferring of water. What's happening to the rest 70%? So that's where loss of electrical energy is there. So any equipment which we are using, some amount of electrical energy is getting lost in form of heat energy. So 100% is never getting converted, but until and unless efficiency of electrical equipment is given, we will use as if 100% electrical energy is getting converted in doing the job required. So here we know that 30% of our electrical energy is equals to mechanical energy. So we'll put our values and on solving we'll get our required answer. So in this case power is coming as 44.4 kilowatt. Well, that's all for today's lecture. I sincerely hope you enjoyed the lecture and have gained confidence in power. In case any doubt, you can always post on comment section. And next lecture will be taking about when two or more bulbs are connected in series or parallel, then which bulb will glow more. Thank you.